लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून खोल फौलाद हुआ, मरते तक दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। Respected dignitaries, our patriarch, our inspiration, Padma Shri Dr. N.N. Jain Sahab, family of Mrs. Prabha Dinanath Bhargav ji, Shri Gautam Kare ji, dear colleagues, directors of prestige institutions, respected faculty members, and my young prestigians, and all the family members of Prestige Group. I wish you a very happy and auspicious 75 years of independence. It is literally an emotional occasion for me addressing you on all this momentous occasion on behalf of Prestige Education Foundation. I take this opportunity to salute and bow my head before the indomitable sacrifices of our great freedom fighters, heroes of our freedom struggle, who unshackled our motherland from the imperialist British regime and won hard-earned independence for us. Through this platform, I take this opportunity to also welcome our distinguished guest, after a while, Honorable Minister of Home Affairs and Assembly Issues, Shri Narottam Mishra ji, and the newly inducted Mayor of Indore, Honorable Shri Davish Bhargav ji. दोस्तों, आज जब हमारे देश की आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव देख रहे हैं, मैं सचमुच अभिभूत और भावुक महसूस कर रहा हूं। यह समय हमारे देश की 75 साल की प्राप्त सफलता और उपलब्धियों का जश्न मनाने का है। यह समय है हमारे देश को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का, भारत को उसका स्वर्णिम इतिहास लौटाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने हेतु संकल्प लेने का। मेरे प्यारे देश के होनहारों, आज का दिन उस ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करता है जब 75 साल पहले हमें स्वतंत्रता मिली थी। जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह वर्तमान में क्या करते हैं। इसीलिए हम एक बेहतर कल के लिए और आज अब को बेहतर उपयोग करना होगा। एक उत्कृष्ट राष्ट्र निर्माण बिना उत्कृष्ट नागरिकों का संभव नहीं। अतः एक उत्कृष्ट नागरिक बनना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। पूरे विश्व में भारत अकेला एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं को बोलने वाले लोग
लोग सदियों अपनी आपसी भाईचारा एवं सहिष्णुता के साथ रहते हैं, पर कुछ निहित स्वार्थी तत्व, कुछ भारत विरोधी ताकतों के माध्यम से हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सहिष्णुता को खंडित करना चाहते हैं। हमें ऐसे तत्वों से हम सबको सजग रहना होगा। हमें हमारे देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एकजुट होना होगा। हमें आज यह वचन देना होगा कि हम अपनी मातृभूमि को कभी नुकसान नहीं होने देंगे तथा देश को दुनिया में शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों ने सत्ता सौंपी तो उन्होंने हमें विभाजित कर दिया और हमें तीसरी दुनिया के गरीब राष्ट्र के रूप में निरूपित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देशवासियों को उनकी जरूरत का भोजन उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त अन्न उत्पादन करने की स्थिति में नहीं था। हमारे पास दूध की कमी थी। किल्लत के बीच हम मिट्टी के तेल और चीनी जैसे राशन की बुनियादी चीजों के लिए विवश थे। पर पिछले 75 वर्षों में जब से भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है, हमने एक लंबा सफर तय किया है। चुने हुए हमारे देश में कपास, जूट मिलें और लोहा और इस्पात उद्योग जैसे बहुत कम उद्योग थे, लेकिन पिछले 7.5 दशकों में भारत विश्व के सबसे अधिक औद्योगिक देशों की श्रेणी में उभरा है। इन 75 सालों में देश की विकास यात्रा अद्वितीय रही है। आज हमारा देश स्वयं का उपग्रह, मिसाइल एवं रॉकेट लॉन्चर का निर्माण कर रहा है। Friends, from a grain deficient nation, India now has emerged as an agriculture powerhouse of the world. It ranks only second to China in the agriculture sector and produces about 25% of global food grains. Despite the unprecedented times of COVID-19 pandemic, India has emerged as a global manufacturing hub and effectively surpassed United States to become the world's second most desired manufacturing destination. India is among the few countries that have recorded 4 consecutive quarters of growth amid COVID-19, reflecting the resilience of the Indian economy. And now, according to IMF, India's World Economic Outlook data, India has become the world's 5th largest economy, leapfrogging France and UK. Under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, our country has emerged as the world's fastest growing major economy. Our country's economy in the past 8 years has risen from $1.88 trillion to $3.33 trillion in 2022. Going by the current growth in India's GDP, in next 5 years, India is all set to become a $5 trillion economy by 2026-27. And India is all poised to become $30 trillion economy in the next 30 years. मित्रों, पिछले 7.5 दशकों में भारत एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमारा देश पूरे विश्व में 5वें स्थान पर है। मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला भारत एकमात्र एशियाई देश है।
हमें पूरे विश्व में अपने पहले मंगल मिशन में सफलता का स्वाद चखने वाले हम पहले देश हैं। अगर गगनयान मिशन आगे बढ़ता है तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। कुछ साल पहले हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की गई मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी अनेक पहलों योजनाओं के कारण भारत अब स्वदेशी रूप से बड़ी संख्या में रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर रहा है और अनेकों रक्षा उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। Our country stands today as one of the leading nations in the world in terms of research, innovation, and technologically progress. We have moved from a rank of 81 in 2015 to rank of 46 in 2021 on a global innovation index. We are the largest exporter of IT services in the world today. Export dominate the IT industry and constitute about 79% of its total revenue. However, despite these glorifying achievements and successes, our country has achieved in the past towards 7.5 decades of our independence. There are many gray areas where we are lagging behind on global parameters. Although India is not in the top 10 list, there is a progressive growth in education in India. Though the progress is slow, the consecutive changes in our education policies and curriculum proves that India is trying to push itself up and stand among the greatest. Being one of the largely populated countries in the world, India stands out, millions of students stands out for higher education. It is not that India does not have universities for students. We have excellent resources and technology. भारत के छात्रों के ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए भारत को कहीं अधिक गुणवत्ता और शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि प्रेस्टीज ग्रुप उन उच्च शैक्षणिक परिश्रेणियों के शैक्षणिक समूह में से एक है जो शिक्षा के क्षेत्र में अंतर को पाटने और छात्रों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा श्रेष्ठ संसाधनों के माध्यम से प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। मेरा मानना है कि शैक्षणिक संस्थानों को समान रूप से छात्रों के नैतिक मूल्यों और राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने पर इरादा देना चाहिए। भारत की एकता और अखंडता के प्रतिकूल विनाशकारी तत्वों के नापाक इरादों को खत्म करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे बताते हुए यह खुशी है कि हमारे समूह के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को टेक्स्ट बुक के अलावा उनमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नैतिक शिक्षा का भी संचार किया जा रहा है। Going by the current trend of our population growth, we are destined to become the most populous nation on the earth by 2030. Growing population may be a bane for the progress of any nation, but if this population effectively plays its role towards nation building, it can become a boon for any country. India has the largest youth population in the world. They constitute 66% of the total population. Nearly 40% of Indian population is aged between 13 and 35 years. Youths are most important and dynamic segment of the population in any country. We are privileged to be the only country in the world with
with the largest youth population. A country like India with a large youth population could see tremendous growth provided we invest in young people's education, help and protect and guarantee their rights. Today's young are tomorrow's innovators, creators, builders and leaders. I am happy to say that Prestige Group on its part has been playing an anchor role in grooming our youth, not only academically but morally and socially as well. We educate to empower our youth to become Atmanirbhar, a change makers of the society. This Independence Day, let us promise ourselves to work harder to make India a nation free of corruption and terrorism. I would like you to all keep doing a little good every day, and one day we have a country without such problems. I would like you all to take collective pledge to promise your motherland to do everything for her prosperity, growth and honor. मेरे प्यारे छात्रों, जिस उत्कृष्ट भारत का सपना हम देखते हैं, वह मात्र शिक्षा और कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करेगा। मेरे पिता पद्मश्री डॉक्टर नेमनाथ जी जैन ने स्वयं एक इंजीनियर बनने के लिए शिक्षित करके सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने सपने को साकार किया। उनके संतान के रूप में हमने उनके पद चिन्हों पर चलकर प्रेस्टीज ग्रुप को सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं चाहता हूं कि प्रेस्टीज समूह तथा हमारे समूह के शिक्षण संस्थानों की गरिमा को और अधिक उत्कृष्ट तक पहुंचाने में आप सबकी भूमिका उल्लेखनीय हो, और मुझे उम्मीद है आप सब निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट नागरिक बन प्रेस्टीज की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाएंगे। We have succeeded in achieving economic freedom. The few lessons from my own life that I will share with you all. The first, there is no substitute to hard work. Second, honesty plays in the long run. Third, humility is a weapon of the strong. Fourth, anger and ego destroys people. Fifth, leave the world a better place than what you came into. Sixth, each day is a new beginning. So keep learning and developing in a positive manner day after day. Let us resolve to grow in the education space, both in quality and quantity numbers. We shall open more universities in other parts of India and build them into global temples of learning. We shall impart updated knowledge and experiential learning to students. We have AIC, Prestige Inspire Foundation, already established for that purpose. Let us take a pledge. Let us take a pledge. Please repeat after me. I shall deliver beyond my capabilities with advanced pedagogy, the most relevant content to make my pupil into industry-ready professionals, a top-class entrepreneur, and disciplined true son and daughters of Mother India. अंत में यही कहना चाहूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू।
जय हिंद।